have intensified security arrangements to stop the farmers' march as the Singhu and Tikri borders were shut. The Red Fort complex has also been closed temporarily. Meanwhile, those are the latest visuals coming in from the border areas on your TV screens. As you can see, well, there has been heavy traffic congestion on various routes. This is from Chila border, Shambhu border, that's the Punjab-Haryana border, and visuals coming in from Tikri border as well as Singhu border and the Ghazipur border, where there has been heavy traffic because of the farmers' protest. The farmers had called for a ceasefire yesterday, and they had temporarily halted their protest, but today once again they're out on the streets, and the police has made arrangements so that they can stop the farmers from marching ahead. All right, well, my colleague Vishal is also now joining us on the broadcast. He's also getting us more details. He's at the Shambhu border, we believe, at this point in time. Vishal, what is the situation on the ground? So, Kitty, just a few minutes ago, about 20 odd to 30 odd people tried to, tear down the second level of defense that the other side police had and the other side's paramilitary forces had put in a few days before. So the protesters had breached the first level of defense yesterday. The second major level of defense still remains. So they tried to, tear it down today. The first push was made just a few minutes ago, but that was immediately stopped by heavy incoming tear gas fire from the other side. So we are on the Punjab side. On the other side is Haryana. That is the whole situation here. Thousands of farmers from all across Punjab are here. They are, they are willing to take any means necessary to go to the other side and then move to Delhi to raise their voice against the government, to raise their voice and say that MSP must be guaranteed to them through a law. That's their main point of contention. The issue still remains. Few minutes ago, about half an hour ago, there was a press conference by all the farmer union leaders. They said that they haven't heard much from the government, so they are waiting to make like a final push on this. And the youth that I spoke to, they have also told me that they haven't gone, gone in with their full mojo. They are waiting instructions, but once in a while, since yesterday, they have been trying to breach the second level of defense there and try to get to the other side. There are also people on the farmlands that's there across on the left and right side of the border. I would request Ashwini, our camera person, to pan and show that there are some farmlands there. People are using, farmers are using those farmlands also to get to the other side, but they remain steadfast that this Shambhu border is the area where they would want to, raise their voice and to go to the other side. They have called in their preparations, and today they are more prepared than yesterday. They have makeshift fans attached to tractor trolleys that blows away the smoke to the other side, so that the people who have come here from all across the state, they are protected. They also have makeshift jet sprays installed on the back of their tractors to blow away the smoke, to diffuse the smoke bombs that come in raining. So these are some of the preparations. As we have been reporting that there are multiple langar sites. One is right here. So people are also getting fed from time to time. Free food is getting distributed. The farm leaders here saying, so the government, of course, the government is saying that they're ready to hold another level of talks with the farm leaders. What are the farmer leaders saying here? Are they ready for another level of talks or no? Of course, they have been saying they are ready for talks, but what they mean, what they really want is a concrete response, right, which they claim they haven't got. So that's the whole issue. Earlier in the day, few of the central ministers did speak on the issue and said that they are ready to talk. Arjun Munda and yes, one other minister had spoken on the issue. But it remains to be seen here. It doesn't reflect here. The farmers are still protesting. They are agitating. So that there's no positive outcome coming as so far.
Well, yes, so far the reactions that have come in so far, what we are learning is that the farmer leaders are saying that the government keeps calling them for talks, but there is no consensus on issues, there is no concrete action that they are assured of from the government side. All right, let's also now listen into what Union Agriculture Minister Arjun Munda had said earlier, and also the reactions coming in from the farmer leaders. किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित ना करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो। एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। आज जिस तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की, और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूं कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। Okay, so the farmer leaders here are saying that they have not been treated well. Even tear gas has been fired at them to stop their march, to stop their peaceful march, what they're saying, from going forward. All right. Well, what also we are learning now, the information that's trickling in is that there has been a lot of inconvenience that the people are facing at the border areas. Also, there has been traffic congestions also at a lot of places in Delhi and nearby areas in the NCR as well. What is the situation at Singhu border at the moment? My colleague Vedant is present on the ground. He's getting us a sense of the situation there. Vedant, take us through what is happening there. How is the situation at the moment? Kitty, we've been camping here at the Singhu border for the past 3 days, and now it's been entirely sealed. So there are these permanent structures that have been erected here, and which is why this 3-kilometer stretch, which essentially is a very important stretch between Delhi and Haryana, that has been completely sealed, permanently sealed. And if you remember last time, Kitty, this was the area where farmers were sort of camping for almost a year, in fact, and it's actually the regular folk that have been inconvenienced. So a lot of people have to walk from the other side to reach the national capital. Let's get in a sense from them. कहाँ से आ रहे हैं आप? सर हम यूपी से आ रहे हैं, प्रयागराज। लेकिन आप हरियाणा साइड से भी दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, अभी हरियाणा से दिल्ली जा रहे हैं। अभी अब ये पूरा एरिया सील कर दिया गया है, तो आप बहुत से लोग यहाँ पर जो है पैदल जाना पड़ रहा है उनको अपना सामान लेके। कितनी परेशानी आ रही है? सर बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अभी सुबह में मैं दिल्ली से हरियाणा जा रहा था, तब भी प्रॉब्लम आ रहा था। अभी मैं हरियाणा से दिल्ली जा 2 किलोमीटर पैदल आ रहा हूँ, और पैदल आ रहा हूँ, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। गाड़ी एक ना बाइक आ पा रही है, ना ऑटो आ पा रही है, ना कार आ पा रही है। उधर में बाइक को अब किधर खड़ा किया जाए? Okay, so Kitty, as you heard it from the people who are being inconvenienced here, just look at this is the only sort of space available for the regular commuters to actually come from the other side to this side, because constantly, there are preparations underway to make sure that this area is completely sealed. There are these big cement barricades here. You have barbed wires being put here as well. Well, yes, that's a very narrow passage actually for the movement of the people here. Of course, the border areas have been completely sealed so that the farmers can't go ahead and proceed towards the national capital. However, the farmers on the other hand have been saying they want to carry out peaceful protests. But, they have reached towards the border areas in tractors, trolleys, and that definitely what the government is saying is going to cause major inconvenience to the people. If they want to sit and talk, they must, they must sit with the government and, the representatives who've been trying to reach out to the farmers. 2 meetings have also been held, and they must have talks with the government on their demands instead of causing this inconvenience to the general public. All right, we also have ground reports by my colleague Vishal, Shrirupa, as well as Sharad from the border areas. Let's also take a look. We have with us Ramandeep Singh Maan. He's one of the farmer union leaders that has come here.
He is congregating with thousands of people who have come here. We'll try and speak with him. सर आपका कौन सा यूनियन है? मेरा कोई यूनियन नहीं है वैसे, मैं हर एक के साथ काम करता हूँ। ओके, हाँ जी। तो अभी आपके साथ ये यूथ खड़े हैं, ये बॉडी आर्मर पहने हुए हैं, इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन आपने कल देखा नहीं, वहाँ से गोला आता है और यहाँ पे लगता है कान के पर्दे फट रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है एक हमारे बंदे का पेट फट गया। तो ये तो सेफ्टी के लिए, अटैक के लिए नहीं है। तो क्या ये उस टीम में है जो कि जाएंगे और सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस को ब्रीच करना चाहते हैं, क्या उस टीम में है? तो मेरे को ना इस चीज़ से प्रॉब्लम है, जैसे और भी एंकर्स वगैरह बोल रहे हैं ना कि ब्रीच कि तोड़ देना है। वो ना पहले सोचती ना अभी सोच है, सीधी सी सोच है। वी जस्ट वांट टू गो टू द प्राइम मिनिस्टर एंड वी जस्ट वांट टू प्लीड आवर केस, है ना जी। अब वो उनसे याचना करनी है हमने। अब यहाँ पे इन्होंने जो होता है किलेबंदी लगा दी, है ना। तो अब और क्या, तो अब तो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं। लेकिन जाएंगे जरूर अपनी एप्लीकेशन लेके। अगर ये जो रोड रोक देंगे, जो भी और करेंगे वो ठीक है। अगर रोड रोक देंगे, खेत से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे जरूर। और क्योंकि वी आर नॉट गोइंग देयर टू फाइट, वी जस्ट वांट टू प्लीड आवर केस। हम तो अपना केस रखने जा रहे हैं। हाँ जी। आपका नाम क्या है? रविंदर सिंह नाम है। उम्र आपकी? मेरी 26 साल उम्र है। तो आपका क्या लक्ष्य है आज? लक्ष्य अपना ये भी अब बॉर्डर तोड़ना ही, क्लियर करना ही है। आंसू गैस तो बचना ही, बस बाकियों को बचाना ही। तो आप कल भी गए थे? हाँ, कल भी गए। तो आपको चोट लगी थी? हाँ, कल मेरा गोला बच्चा था, बस परने के ऊपर, बाकी सेफ है। तो आप कब चाहोगे कि आप ये अपना मिशन करो आज? टाइम कुछ डिसाइड किया आपने? टाइम टू नहीं है, ये चंपट दे बस हम तो निकल गए। So there you have it. People, farmers are getting ready to go to the other side. They are right now awaiting instructions. So we'll try to bring you the latest from here. Right now situation seems to be somewhat normal, but the CRPF personnel from the other side have been throwing tear gas canisters every now and then. So people have been running in all directions. We have a farmland across this area. On both sides of the river, there's farmlands, and people have also been going there and trying to cross the border. So the situation remains tense here, and we'll try to assess the situation and get you the latest. With cameraman Ashwini, this is Vishal Vivek for NDTV. Heavy deployment of police personnel as well as barricading of several roads in the national capital has added to the traffic woes of several commuters. This is not just the story of Delhi but also of NCR region. People are having trouble commuting from one place to the other, taking an hour or even more. Let's speak to a few people and listen to what they have to say about these बैरिकेडिंग एंड these security measures taken by the police. सर, आपको ट्रैफिक की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जब से ये बैरिकेडिंग वगैरह शुरू हुई? ज्यादा हो गया ट्रैफिक? बहुत ज्यादा हो गया। आधा घंटा से खड़ा हूँ लाल पट्टी में। आधे घंटे से खड़े हुए। फिर अच्छा, आप आ कहाँ से रहे हो? मैं यहाँ से आ रहा हूँ ऑफिस से। अच्छा, तो कल भी ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था? कल शाम को ऐसे ही। कहाँ से आ रहे हैं आप? कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से कितनी देर तक ट्रैफिक फेस करना पड़ा? 15 मिनट, 15 मिनट। हाँ, 15 मिनट। 15 मिनट्स कश्मीरी गेट से यहाँ तक? नहीं, कश्मीरी यहाँ से, रेड लाइट से। अच्छा, यहाँ से रेड लाइट से आपको 15 मिनट्स लगे हैं कि आपको यहाँ तक आने के लिए? तो ये सिचुएशन जो है, ये बैरिकेडिंग जब से ज्यादा हो गई है, अभी कल से ज्यादा हुई है बैरिकेडिंग, उसकी वजह से ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रहा है या फिर पहले भी ऐसे? वजह से ज्यादा है। यूजुअली वैसे जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये बैरिकेडिंग की वजह से दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से? नहीं, कल से हुआ है मैम, कल से ज्यादा हुआ है। अच्छा, कल से ज्यादा हुआ है। सर, आपका नाम क्या है? सर, ये जो अभी बैरिकेडिंग हुई है, इसके वजह से ट्रैफिक बढ़ा है? बढ़ा है। तो बढ़ने के चक्कर में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? 1 घंटा हो गया आते प्रीत विहार से ITO तक आते आपको 1 घंटा लग गया। और ऐसे कितना टाइम लगता है? ऐसे 15-20 मिनट। तो इसके चक्कर में ये जो जैम हो रहा है और इतना वक्त लग रहा है आपको आने और जाने में, आपकी आमदनी पे भी ये इफेक्ट कर रहा है? सर, ये तो हो ही रहा है। जिधर जाना है उधर की सवारी मिलता है, फिर बाएं मरवा देते हैं, कभी दाएं मरवा दिए। तो ऐसे ही होता है। और आज ट्रैफिक की वजह से बहुत दिक्कत है। ट्रैफिक की वजह से। Like you could hear, he said that because of the traffic woes, there have been issues not only with commuting,
but also affecting his livelihood as he's an auto wala. It is not only him, but when we spoke to a few other people who have been traveling to work, they said that despite them trying to leave early, they did not reach on time because of the traffic woes. With camera person Stephen Anthony, this is Sri Rupa Goswami for NDTV. इस वक्त मैं दिल्ली के कालिंदी कुंज पर मौजूद हूँ और आप जो सड़क इस वक्त देख रहे हैं ये नोएडा से यहाँ पर आते हुए लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर जो सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है उसकी वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। उसके अलावा ये जो मंजर आप इस वक्त देख रहे हैं ट्रैफिक का, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर किशन। ये रोज का ट्रैफिक कितना रहता है या फिर अलग? नहीं, आज ही है। आज ही है क्योंकि किसान आ रहे हैं, इस वजह से सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। ठीक है, आपको आगे जाना होगा क्योंकि देखिए अगर हम लोगों से बात करते हुए ऐसे में चलेंगे तो और ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो बढ़ता हुआ जाएगा क्योंकि ये फिलहाल मूविंग ट्रैफिक है। लेकिन ये जो मैं आपको इस वक्त दृश्य दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पीछे से यहाँ पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि ट्रैफिक मूविंग है क्योंकि जो सड़क है उसे सिर्फ बॉटल नेक किया गया है बैरिकेड लगा करके, यानी कि उसे जो ट्रैफिक है उसे स्लो मूवमेंट हो और पुलिस हर गाड़ी का, हर आते जाते ट्रक और बसेस का निरीक्षण कर सके, ताकि ऐसे में जो किसान है वो यहाँ से किसी तरीके से ना निकल पाए। यहाँ पर कुछ बाइक से लोग जा रहे हैं। आप कितनी मुश्किल हो रही है? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होता? बहुत ज़्यादा। पहले हमेशा ऐसा रहता है या अभी आज 4 दिन से ऐसे हो रहा है। ये किसानों की वजह से जो सुरक्षा कर्मी की है उस वजह से आपको ज़्यादा फील हो रहा है? आज तो कम है। बिल्कुल। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो बाइक कर्मी है वो उस वक्त जो बाइक है वो फुटपाथ पर चला रहे हैं क्योंकि और कोई चारा यहाँ पर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा लंबा ट्रैफिक इस वक्त मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक यहाँ से दिखाई दे रहा है, न जाने पीछे तक ये कितना ज़्यादा और फैला हुआ है। देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है। और ये रोज़ का ही हो रहा है? आप 2-3 दिन से तो कितने घंटे आपके बर्बाद हो रहे हैं इसमें? 1-1 घंटा 1.5 घंटा हो रहा है। देखिए 1-1 घंटे से 1.5 घंटे का समय यहाँ पर बर्बाद हो रहा है और लगातार यही मंजर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जो किसानों के लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो बैरिकेडिंग की गई है, उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो स्लो चल रहा है। यानी कि जो गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं उन्हें समय लगेगा। हालांकि आगे रेड लाइट भी है, पुलिस गाड़ियों का निरीक्षण भी कर रही है, उसके बाद ही उन्हें जाने की अनुमति यहाँ से दी जा रही है। यानी कि जो आम जनता है वो सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त इस सुरक्षा की वजह से हो रही है।